We are on a recorded call, and I'm about to start asking those questions, and I appreciate that. Okay, we are on recorded call now. Again, you are the executive director. How big is the team? Right now, with the board and some volunteers, about 19. Okay, and it's only one location or multiple? Yes, sir. It's just right here in Edmonds, Washington, 13 miles north of Seattle. Okay, you woke up so early today just to be on a call with me. I am so honored for this. It is early, yes. It's 6 a.m. So yes, 6 a.m. Yeah, I know the time. So what drive you to that energetic, be ready for guest appearance at 6 a.m.? What's that? What's to it? Be with you. To be with you. I know. Talk about L.E.G cancer. Why is that important for you? Because we do we fund the research here in Seattle for pediatric cancer. Okay. Without research, there's no cure. 100%. Agreed. What is the website? L.E.G cancer, LEGSSACKCANCER.org. L.E.G cancer.org. That's a great branding, by the way. I'm visiting the site right now. L.E.G Cancer Foundation. We are 501c3 nonprofit raising awareness and funding the rights. How much? What's your yearly budget for this? Pardon me. What is the yearly last year budget for this foundation? Well, we're just actually getting started. We've been up and we were behind Russell Wilson for 6 to 8 months, and now we're on our own. And then COVID hit, and then Corky got COVID. Yeah. So we've just got started, and we're around $25,000. Okay. Thus far. Okay, and how you got this idea of starting this foundation? How did I get it? Yeah. I got ill myself. Had a sister that passed away at the age of 17. Had the opportunity to put this together through my volunteer work at Children's, and here we are. Okay, excellent. So you are the living example of this need to be cured, Yes. Okay, how young are you? We need to have it. I am 76 years young. Yeah, I know the feeling. Okay, wonderful. I'm glad this brought a smile on your face. So all these people are volunteer or working with you, or some are on payroll? There's no one on payroll at this time. No one is on payroll? No, I'm the main tire burner. Yeah, I know. So yeah. Out of those, what's your expense ratio? 86% goes to the research. 14% goes to your admin? Yes, sir. That covers what? Covers expenses that we need. I take nothing right now. I'm sure the board's going to change that next week. But I'm very tidy with it at all times because it's important to me. We got to remember our kids. Yeah. Have to remember the kids. I did a quick math, Corky. You only have expenses are very small. It's less than $4,000 based on what you raised, 25,000, 14%, 15%. Yes, sir. Okay. Do you have office or everybody work from home? I am sitting here in my dining room. Okay, understood. And, I got my answer. It's I understood. Very good. So how you are outreaching to the your sponsors or donors, and what you are saying to them? Imagine you're talking to a donor right now. What would be your pitch? Well, basically, it's what I said to you earlier. If there's no research, there's no cure. Yeah. We need to find a cure for pediatric cancer. Yeah. Okay. Corky, here's my answer. There are so many other organizations that are doing it. They are asking for money, and I'm already supporting somewhere else. Why you?
Because right here in Seattle, we have one of the top pediatric research facilities in the United States. It's in a 12-story building downtown Seattle. Mhm. And it has a tremendous staff, and they do miracles. They create miracles. Mhm. Okay. And what's your plan to outreach to donors? Do you have a database of donors already prospective, making them calls every day, meeting them in person? Because of COVID, you can't really meet people, and how you're doing it? It's through my background, in my past experiences in my jobs in athletic sales and in the coaching end of things. I've done that. Plus I have some gentlemen that are associated with me that have tremendous reach. And, they provide me with leads, and then I go and, make the pitch. How many leads you already have right now? Probably about 140. Okay, out of 140, how many people actually you got them? I just want to check how good you are as a salesperson. At 140. Out of 140, how many became the real donor that paid you even $1? About 24. 24? What was the highest amount? $9,000. What was the lowest amount? $100. $100. What reason they gave why I'm giving you $100? Why would you give me $100? Why someone give you $100? What give a reason they give? Is it because of the business is slow, or I can't afford it, and what? Well, in 2020, it was a COVID, and people were concerned about what they were doing. Yeah, understood. Who was the $9,000? I don't need to know the name. Is it a persona of that company? How many employees? Are they your close friend or family member or what? It was from a friend. Yeah. And it was an extreme surprise. Okay. So you are not even expecting. No, sir, I was not. Don't mention the name. I'm not going to ask. No. What was their story? What's their story of who paid you $9,000? His brother died of the chemotherapy treatments for cancer. I knew the answer already. There has to be a real reason something in their family happens. That's the regret they have. Yes. That they don't want to make sure nobody else lose their life. That's the only way people will pay you high dollar amount. That's correct. If you have experienced Absolutely. something very close, you love the most. That's what happened. Okay. Yes. I have no idea what will happen on this call. I don't know. You are coming to bring awareness and more exposure for your great cause. I appreciate you. Kudos to you on this cause. And I will do my part to make sure. Here is something I'm going to offer you right now. Are you ready? Yes. One of my business partner and mentor is a $10 billion guy. First of all, even the moment people hear the $10 billion, oh, I'm going to get all the money from him. He is going to give you zero. I just want to let you know, he is not going to write you a check of any kind. However, I own him. I'm going to bring him to support you in a way. You get all your 140 people you're calling, bring them into a Zoom webinar. I will have a billionaire to answer their questions. Bring the business people only, not consumers. Answer their question, how they can take their business to the next level. You can sell a ticket $100, $200, $20, whatever that is. Collect the money and keep it too. You are not going to pay him any penny. Okay. That way you can raise more funds. I can help you right now on this one right away. Sounds pretty good. You want to do it? Well, of course. Okay. Who would turn down an opportunity like that? I have seen those people who say, yeah, but I'm looking at a check from a billionaire. Why can't he write a check? He's not going to write you a check. I tell you right up front. You bring 100 business owners, register them on a Zoom. They are ready to be on a call, and he will answer their question for 1 hour, 2 hours, 5 hours, does not matter. Why? Because he'll care about people who really want to help themselves. And because this is the biggest service right now you're doing for cancer, they need help to raise their business to the next level. Somebody billionaire he got over a $1 billion extra in last 1 year alone. His worth has increased by $1 billion. He can share how you can grow their business on higher level. So because of being a guest on this show, now you got billionaire in your pocket. It's not me. I have access to it. I'm extending it to you because I own him. Okay.
And eventually Yes. you will own him too. He's not going to ask any money from you. And if he even asks, don't even pay. I'm just letting you know right now. Don't pay. And he is going to help your business prospective donors, and he is going to push them to donate to you more even further on the call. If they feel they Yes. get a more value, hey, donate to the foundation. That way you can attract more money from your prospective list and get on this one. Is it something interesting? You will do it right away, or you will take a few months to decide? Hopefully as soon as we can. Okay, how that look like? Yes. How that look like? 1 week, 1 month, never, 1 year? Probably within 3 weeks. 3 weeks. Okay. Yes. 1 second. Let me look at the calendar. 3 weeks mean today is the 12th. We are talking about first week of June, around June 10th. I gave you a little more room. Yes. Approximately. Around there. Yes, sir. Okay, That's right. very good. I'm going to put on my calendar. If I don't hear back from you by June 10th, I'm going to ping you. Is that okay? Yes. Ping you is a civilized word, and the other word is I'm going to bug you. You okay? That'll be fine. Okay, thank you, Corky. I appreciate it. I'm putting on my calendar to follow you up. We are good now. Any question for me before we go live? I'm ready. I'm ready for you. Okay, thank you. By the way, never give up on this one because you are working for a much higher purpose. It's very, very important, you know? Thank you. Yeah. Okay. I took a note on my calendar on June 10th. Let's. You have seen all my questions? Yes, I have. And you are prepared for it? Yes, I am. What book you are going to show me today? Doesn't Hurt to Ask by Trey Gowdy. Okay, can I see the cover? Okay, wonderful, wonderful. Thank you. Let me start and we go live. It'll be fun. Greetings and welcome to Growth Hacking Secrets. I'm your host, Mohammed Siddique from Atlanta, Georgia, and the co-author of New Success Secrets, available on Amazon. On this episode, we have a special guest, Corky Frady. Corky is an executive director at SAC Cancer Foundation. Please join me to give a warm welcome to our guest, Corky Frady. Corky, welcome. Good morning. Good morning. Thank you so much. Let me start with this. Where were you? What happened? Who you were surrounded with that inspired you to start Cancer Foundation? Was volunteering at the Children's Hospital, and the opportunity presented itself, and I was ready to do something like this. And I enjoy every minute of it. When you start a foundation or giving back, what are the top 3 mistakes to avoid? Oh, I think that you lose patience. You lose you overestimate your funding that's going to come in, and you might have the opportunity to lose control because you built it to a position where you can't control it. What is your greatest failure story? What did you learn and how did you recover from it? Failures were decisions made years ago about decisions to make. I was coaching in a small town and had a chance to move, but I didn't want to become a nomad. I didn't want to travel everywhere. So I opted not to, should have, didn't. And just use my ability to create networks and become an outstanding salesperson. What did you learn? So be patient. Be patient. Look at things at more than one angle. Don't just look at what you first see, because oftentimes it's money. And that's it should be family. It should be
It should be your environment that you're moving into. You should be secure in it and trust it. How did you recover from it? I just kept moving. I just kept moving. I run with a high engine, and I just kept moving and just tried not to create a deficit for those around me. You just have to be tough. You have to grab it and go. What are your top 3 success secrets that others can model from? Top 3, well, first of all, have faith. I have faith in what I'm doing. I have faith in the Lord because He allows me to do what I'm doing. I trust and I value my integrity. We are And I about. think that those. Go Pardon ahead. me? Go ahead. Go ahead. And I think those are valuable. You have to possess that, and that gives you strength. And that's what you have to have. We are about to move into lightning round. That means quick question and quick answer. Are you ready? I'm ready. What are you grateful for today? Being here with you, being here to talk about what I'm doing. How young are you? I'm very young at 76. Corky, you are not 76. You are 18 years old with 58 years experience. That's correct. That's correct. Every year it's my anniversary, my 39th birthday, but I'll take 18 from you. What do you want to do when you grow up? I don't want to grow up. I want to finish what I'm doing right now. Let's That Cancer will be the last job I have because we're going to have a major effect on the lives of kids. How do you overcome a challenge life throws at you? You have to continue to have faith. You have to understand how you got here. And you just have to be tough. A lot of us that have played athletics and that, you know how to handle difficulties. Those of us that have coached know how to do it. You really have to have a strong internal drive to be able to get inside and keep it going. Don't quit. How do you start your day? By meeting with you at 6 o'clock Pacific time every day. I get up and every day is different. Every day is different, especially with the business we're in. What is the advice you will give to younger yourself? Be patient. Don't be disappointed. It goes back to being tough, but don't lose your patience. Doctors may lose their patience, but if you're starting something, you should maintain yours. Very important. Very important. Once you have a revenue generating idea, how do you convince your significant other? I hope that I do. I've been very successful, but I hope that I do. Talk about it. What is the impactful business book you have read and what did you learn from it? The book that I read, the most recent one that I read, is by Trey Gowdy. Can I see? Can I see the book, please? Yes. Start all over, please, again. There we go. Yeah. Fascinating book. It doesn't hurt to ask. Doesn't hurt to ask what? Questions. Never limit your ability to learn. And that's another advice for a youngster. Only ask questions you know the answers for. Why being impactful is important to you? Because of the results that we will achieve by continuing the funding of this pediatric cancer research. It's extremely important to me because we're working very hard to make it work. Who is your living mentor and what's the impact? Wow. I knew one of these was going to be tough. My living mentor.
It'd be my 11-year-old grandson. He loves a challenge. He loves to read. He loves to sit down with Papa and ask difficult questions, at least to Papa. But it's the drive he has for knowledge, and he is influencing his 7-year-old sister in the same direction, and I really like that. Always ask questions. What do you want to be remembered for? Being kind, being a kind heart, being warm to people, a loving personality, and one who had major effect on the research that doctors are doing for pediatric cancer. Seriously. Who is your ideal client? In this case, who will be your ideal sponsor? Ideal sponsor would be someone who has a general feeling toward children, and they want to express this feeling by seeing what we are doing. And they have the same ideals and look forward to the same results that we are looking forward to. How can we support you? You can support me just like we're doing right here. Mention the name, letsackcancer.org. Yeah, here you Show go. them the logo. Letsackcancer.org. Yeah. Yes. Letsackcancer.org. Check that out. I have visited the site and it's a great mission. And they only have a 14% admin fee. So that means they are really good people and trying to do the good things. And let's join our hand and extend the support by visiting letsackcancer.org. Get ready with your wallet, pay whatever you feel like donating. Okay. There's no binding. $1 is a lot of money when it's about saving someone's life. Very much. Yeah. Very much. We are about to wrap up. I'd like to have you a few words about your today's guest experience on the show. Here's my question. What would you say about your today's guest experience on the show? It's been fantastic. Your questions, you get the direction out of us right off the get-go. And so that we can talk about the projects that we're working with, as well as some information about ourselves personally. To have the ability to spend this time on your network is absolutely stunningly perfect. What would you say as a final word? Letsackcancer.org. We need your help. Can't do it on government money. We need philanthropy. We need donations. We just need you because there are kids that would like to go on vacation with their kids, with their parents, like to ride bikes. You know, that's what we're looking for. Thank you so much, Corky, for sharing your wisdom with us today on the behalf of Growth Hacking Secrets community and our entire team. We really appreciate you. This is Mohammed Siddique signing off from Atlanta, Georgia. Until the next episode, all good wishes. Corky, thank you so much. Let me say this about you. You are not as good as you think. You are better. Your commitment shows at 6 a.m. showing up. That takes a lot. I know I talked to so many people in West Coast. However, being a guest at 6 a.m. is not that easy, you know. I was awake at 5. Yeah, I know that. I know that's what it takes, you know. Yeah. So what coffee you had before you came on the show? Pardon me? What kind of drink you had? What coffee brand you drink? Gatorade. Gatorade? Oh, so you're not a coffee. Gatorade. Okay. Gotta keep hydrated. Yeah. That's good. I'm going to share my screen. I'm going to see how can I help you to the next level on this. And let's see, is it Seattle area? Washington, Seattle area, or which one? You are in Washington, Seattle area? Yes, Seattle? yes, right north of Seattle. Okay, Seattle, okay. What is this, 101? What's the highway? It goes to Vancouver? What's the highway number or name? You know, which highway goes to from Seattle airport if I want to go to Vancouver? What's the highway name? Highway? Yeah. Like I-5? I-5, yes. Yeah. Yes. Yeah. Yes.
When I came last time, my cop pulled me over, and because I was driving fast, they say you have been flying on the road. Is that right? I said, not really. I didn't know you are watching me. So, so 1 second. Yeah. Cancer or philanthropic. I'm going to search and share the screen, then you can see it. I will send you the link to cancer research. Come on. Okay. So you're trying to find these sponsors locally in the, so you can go and meet them or call them, hey, we are local, because the location is local too, I do both local, and then I have a half a dozen or so that are nationals that are in the Midwest and Texas area. Mostly local will respond better because they have emotional attachment. Oh, yes. To the, yeah. Absolutely. Yeah. Okay. I'm going to find somebody. Okay. You have 144. I'm going to give you 268 more. Is that good enough? Yes, sir. I think that will be just fine. Okay. I'm going to share my screen so I can show you. And then if you like, I can have somebody to actually work with you as well. Okay. Let's see. You see my screen? Yes. What I did is I just the quick, because of the time limitation, I did a cancer or philanthropic or philanthropist or whatever, just I did a quick, or donor or board member or something. And because some people may be cancer free or they're doing philanthropy work in Seattle area, there are 268 of them. These are the people you need to connect and share your story. They will love to hear your story. Why? Because they are philanthropic mind or they are cancer free. Something to do with the cancer. Tremendous. Okay. Because yes, their passion and your passion has to match. Otherwise, they are not going to support you. It's a very hard sale. I know you're a hardcore salesperson. I get it. That's why I asked you the question, how the least you got and how the highest amount you got, because 20% sales, that's a very good number. It's not a really bad number. Now you can do with this one, with 268, you can do a lot better. Yes. Okay. If you have a few $100 to invest into this, I can have somebody to work with you to actually outreach to all 268 working with you, not with me. I'm not going to make even a penny on this. It's not the purpose, because the few $100 goes a long way to support somebody. I'm not asking for donation. That person is extending the help who can actually do all this work with you to produce a much better results very, very quickly. It's your choice. Okay. You don't have to say yes or no right now. I'm just sharing extending the help of someone, real human being, for $300 one time in a month. That can help you in a very quick one. That can help you to raise a lot more funds very quickly, or you can do it on your own. I'm just sharing it with you. Thank you. Is that helpful? Yes. I promise Tremendous. you. I promise you 30 minutes. We are on time. We delivered everything what we promised. Thank you very much. Okay. You want the link to the show? It's already gone live to YouTube and Facebook and Twitter. I'm going to give you the YouTube right now, so that way you can actually share it with all the people you donated. They will be happy to hear that you are outreaching to, Yes. And in this private chat, I put a link to the YouTube, which you can share it on your social media and also share with the potential donors and with the existing donors. Existing donors need to see that you are still on the mission. You didn't, take the money and run away. That's number one. The potential donors, they will hear your story on being a guest. That gives you the higher authority. It will move someone's mind to actually become closer to you. Correct. Yes. After watching this, they will probably likely to support you more. I appreciate it. Yeah. If not, they will share it on their Facebook or wherever, then probably somebody else will come. That's the good vibe starts working on that one. That's the power of having a content, being a guest on the show. Yes, it is. It's tremendous. Okay. Anything I could have done better being a host on the show? I can't think of one thing. Okay.
Thank you, we Corky. accomplish, you know? Okay, yeah. Thank you, Corky. I really appreciate the time together. I have to move on to the next. However, have a great day, and anytime you have my contact information, reach out to me wherever I can be help. Glad to help. Thank Okay. you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. हाँ जी, फैसल क्या सीखा है? सर मैंने ये सीखा है कि ये एक कैंसर के डोनेशन कलेक्ट कर रहा है और इसका जो कॉज है वो ये है कि कैंसर पेशेंट्स के ये जो है डिफरेंट कैंपेन्स चलाकर डोनेशंस इकट्ठे करता है। और आपने इसको स्टार्ट में तो मिस्टर ओ के पास रेफर किया, लेकिन आपने एंड में इसको एक रास्ता भी बताया कि लिंक्डइन पे भी ये अपनी जो माइंड मैचिंग लोग हैं उनको रीच आउट करके उनसे आउटकम्स ले सकता है। ठीक है जी। रिजवान हुसैन, सर मुझे ये बताएं कि हमने आप एक मिनट, आप वीडियो ऑन करें ना। इस तरह अगर if you are hiding, why should be in front of you? Turn on the video and start talking. अब नहीं है। अच्छा जी जी बताएं। सर हमने इसको बुलाया गेस्ट को, देखना इससे हमें क्या फायदा होगा? आपने उसको बताया तो बहुत कुछ है। हाँ, ये आपके लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि इसमें क्या फायदा होगा। ओके सर, आप सोचें जरा, थोड़ा दिमाग लड़ाएं। जी अबरार अहमद सर जी, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? रिजवान, आपने उसे मिस्टर ओ का भी बताया कि वो आपको मतलब इसमें कोई भी आपकी फाउंडेशन है उसमें सपोर्ट करेगा, कैसे आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद आपने लिंक्डइन के उसको अपनी इम्प्रूवमेंट शो करवाई कि कैसे तुम अपने लोकली एरिया में लोगों को फ्रेंड करके जल्दी से जल्दी इसको अपग्रेड कर सकते हो अपने काम को। तो सर ये तो ठीक हो गया, लेकिन मुझे अपने बारे में नहीं समझ आया कि हमने इसका यह इंटरव्यू और हमारे पास क्या फायदा है। आपको क्या फायदा होगा, ये आपका अपने लिए सवाल है। मैं अभी आपके पास वापस आता हूँ, सोचिएगा क्या जवाब है, फिर मैं आपको बताता हूँ आपका क्या फायदा है। जी अबरार अहमद, अबरार अहमद आपकी ऑडियो नहीं आ रही। हेलो, ओके जी। बुरेर अली हुसैन, मेरे ख्याल शायद ये मैंने देखा है आपको पहले, ये तो आप डिफरेंट लग रहे हैं, ये आप वो तो नहीं है। नहीं, मैं बुरेर अली हुसैन का वालिद बोल रहा हूँ। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैंने तो उनको नहीं कहा था कि आपको ले आए, वो बच्चा स्टूडेंट बनते बनते उनके फादर भी आ गए सामने। जी जी जी, बस उसने कहा कि जी आप भी आए जरा देखें हाँ कि अपना सिद्दीक साहब क्या बातें कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छी बात ये सिद्दीक साहब, मुझे सबसे पहले तो बहुत सी बातें समझ ही नहीं है, कोई बात बाद नहीं, में बेटे ने थोड़ा सा मुझे प्रॉम्प्टिंग की तो मुझे कुछ पता चला कोई बात कि नहीं। माशाल्लाह बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप। और फिर ये बड़ी खुशी हुई कि आप मेरे हमसाये शहर रहीम यार खान से हैं, मैं मुल्तान से। जी सोन हलवा साईं तुसी आप खुद खांदे रहे हो तो सानू तुसी मुल्तान पे सानू रहीम यार खान भेज देता। सोन हलवा दा तो मजा ही हो रहा है। बड़ा सोन हलवा जी जिथे आपको तुसी भेजांगे अच्छा अमेरिका जॉर्जिया इंशाल्लाह भेजांगे। हाँ बिल्कुल जी, बाकी तेरी गल्लां बड़ी अच्छी लगियां, बड़ा अच्छा थोड़ा काम लगा। हाँ जी, ते मेरा सवाल ये है कि अगर मैं पहली बारी नवा बंदा आया हूं ते मेरे वास्ते की चांसेस ने, ते मैं किस तरह काम करा, तो मैं किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਜੌਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹते हैं। बेटा तो माशाल्लाह कर रहे हो, बेटा अपना बेहतर समझदा है, अच्छा ठीक है ना। हाँ ते मैं तो समझ ना सक सारा दिन वेला बैठ के लैपटॉप ते कोई टाइम ही जाया करदा रहंदा, हाँ लेकिन आज पता चलिया कि माशाल्लाह बड़े लोकां नाल भी उन्हां दा राबता है, बड़ी खुशी दी गल है। हाँ मैं अपने से करना, अगर मिसाल दे तौर पे मैं कुछ करा या कोई लेमैन आवे पहली मरतबा आवे वो आके काम करे तो ओदे वास्ते की चांसेस ने, तो किस तरह काम करे। ये बहुत अच्छा सवाल है। ਤੁਹਾਡੀ एजुकेशन की है? मेरी एजुकेशन जी मैं रिटायर्ड प्रोफेसर कॉमर्स कॉलेज मुल्तान में पढ़ाता रहा, 31 साल पढ़ा है, उर्दू पढ़ाई है। अच्छा अच्छा, उर्दू की? उर्दू का नॉलेज है मेरा। अच्छा, इंग्लिश आपको मेरी इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी या उसकी नहीं समझ आ रही थी या कि इंग्लिश से ताल्लुक ही कोई नहीं है? नहीं इंग्लिश समझ आ जाती है, मतलब वो जरा थोड़ा लहजा जरा थोड़ा काम करता है। वो 5-7 दफा आवाज करो तो बंदा ठीक हो जाता है, दिमाग ਨੂੰ ट्रेन करना पैंदा और कुछ भी नहीं।
जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है सही हाँ बिल्कुल हो तो कोई मसला नहीं ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਿਲकुल ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲਹਿਜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਸੀ ਇਸ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਨੇ ਆ ਜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 2018 ਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਬਸ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਸਿਪੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਕੱਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਚ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਘਰ ਚ ਹੀ ਇਹ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਘਰ ਚ ਹੀ ਨੈਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਝੜ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਈਦ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਰੈਸਿਪੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਈਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਦ ਆ ਇਹੀ ਅਸਲ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰ 25 ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ 18 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ ਮੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ 30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਰੇਰ ਕਿੱਥੇ ਬਰੇਰ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੋ अब्बू जी ने दिखा देवा थोड़ा ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है अच्छा। और ये है कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि भाई कोई भी चीज मैं ऐसा ना करूँ हाँ। जो मैं खुद ही अकेला ही कर रहा हूँ वो किसी को मालूम ना हो क्योंकि मेरा रवैया ऐसे गिविंग नेचर है मेरी ठीक है अच्छा है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत टाइम लग जाता है मुझे बड़ा मुश्किल पेश आती है इसमें। अच्छा जी आपका नाम क्या है आपके फादर का नाम क्या है रियाजुल अब्बास साहब रियाजुल अब्बास साहब बच्चे के माइंड में ये है कि हाउ टू कन्विंस माय पेरेंट्स ये थोड़े दिन पहले सवाल पूछ रहा था यही था सवाल बरेर जी रियाज साहब आप ये कैसे कम्युनिकेशन का गैप आ गया कि आपका बच्चा आपसे ही सोच रहा है कि अपने मैं पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूं ये कम्युनिकेशन का गैप नहीं आया ये चूंकि ऐसा है कि आजकल कोविड की वजह से बेरोजगारी का मसला है बड़े मसाइल है तो इसमें हम यही सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके तो रोजगार का कोई सिलसिला हो और फिर खैर से बरेर की जो है ना कुछ नहीं मेरा सवाल ये नहीं है मैं सवाल का जवाब देने तो बगैर मैं दूसरे बंदे ने हिलने नहीं दिंदा किसी पासे ये नहीं मैं वही कह रहा हूं मैं यही कह रहा हूं कि भाई मेरा मतलब ये सी कि कोई ऐसा सिलसिला होवे ना कि जे कोई मतलब ठोस अर्निंग आवे कोई नजर आवे कुछ ते चूंकि बरेर मतलब होने शुरू किया बरेर ने
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਟ ਚੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜੀ ਬਰੇਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? जी जी बिल्कुल यही सी। हाँ तो फिर ये भी क्या कि मैं भुलिया भी नहीं थोड़ा सवाल? नहीं मैं बिल्कुल मैंने कोई ऐसा सवाल किया ही नहीं कि जिससे मैं शर्मिंदा हूँ। नहीं, शर्मिंदा वाली बात नहीं है। मैं आपके फादर से ये पूछ रहा हूँ, आप माशाल्लाह प्रोफेसर हैं, आप तो स्टूडेंट से डील करते रहे हैं। अगर आपका अपना बच्चा ये सोचने वाली बात है, वो ये सोचे कि मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूं, तो ये सोच में बड़े मसले हैं सवाल के अंदर। जी सही। दरअसल सर बात ये है ना कि मुझे खुद भी शर्म आती है, क्योंकि पेंशन जैसे बात की ना वाले साहब ने, तो मैं नहीं चाहता कोई भी ऐसी चीज हो, कोई भी ऐसा काम करूं जिसमें इन्वेस्टमेंट दरकार हो। ठीक है। मैंने जितनी भी चीजें सीखी है ना अभी तक, ये जितना भी चीज ली है वो मैंने स्किल की बेस पे की है। अगर मैं कोई वीडियो एडिटिंग कर लेता हूँ या मैं कोई उस पे एक्सेल पे काम कर लेता हूँ, ये मैं सारे स्किल फ्री में सीखी। सनी अली है, वो दूसरे सके बदर साहब हैं, इनके प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ जगहों से। तो मेरी कोशिश ये होती है कि इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, या इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी स्किल्स की हो या मेरी अपनी हो। हाँ, अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो उसको मैं री इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 रुपीज कमा रहा हूँ, उसमें से 80 मैं री इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। ठीक है। मैं ये इस चीज पे घबराता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जो इतनी मेहनत से वाले साहब ने कमाया है वो सारा खत्म हो जाए इन्हीं कामों में लगे। नहीं, बहुत अच्छी सोच है। और आपके वाले साहब के बहुत हार्ड एंड मनी है, टैक्स दे के वो कर रहे हैं, और बड़े अच्छे प्रोफेशन में है कि उन्होंने लोगों को सिखाया कि उर्दू में बात कैसे करते हैं। अब मेरी उर्दू तो बिल्कुल -10 वाली है ना, अब इसमें क्या करूंगा मैं, अच्छा पंजाबी बोल रहे हैं, कार नहीं उर्दू बोल रहे। अच्छा फिर उर्दू का फिर फायदा तो ना होया, बार लोगों ने सिखाई है तो घर इस्तेमाल ही ना करो। नहीं, अल्लाह का शुक्र है बरेर ने बचपन तो वालदा ने ते मैं रल के ट्रेन किया कि नहीं हर जगह ते तकरीरी मुकाबले च हिस्सा लिया, इंग्लिश विच उर्दू विच। बेटी ने भी माशाल्लाह फर्स्ट प्राइज लेंदे रहे। ठीक। आर्ट्स काउंसिल विच अपना प्रेस क्लब विच स्कूल दी हद तक ते फिर अपना बैनल जो कुलियाती इदारे सन उन्हां च गया, बावलपुर गया, और जगह तो गया माशाल्लाह। तेरी उर्दू बहुत अच्छी है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये सवाल पूछने की क्या जरूरत पेश आई थी? पैसों को छोड़ दें, पहले ये क्लैरिफाई कर दें। मैंने आपको कहा पैसों के बगैर आप मेरे से बात नहीं कर सकते या सीख नहीं सकते, बरेर क्लियर कर दें सबको। नहीं सर, आपने ये कहा है नहीं बिल्कुल भी। हाँ तो फिर कि पैसों की बात नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर है एक वो टाइम आता है ना जब आप एक बंदा सोचता है कि पहले एक बंदा स्टार्ट करता है फ्री से, फिर बंदा वो सोचता है कि वो एक लेवल पे आके इन्वेस्टर बनने का सोचता है। आखिरी बात तो यही होती है ना। तो सनी अली वाली गल्लां कर रहे ना, मेरी गल नहीं कर रहे। जी बिल्कुल सर, वो बड़े क्लोज फ्रेंड है, बहुत मेहरबान है, ये साथ में पता बिल्कुल सर। बिल्कुल जो सीखा है ये इन टीचरों से ही सीखा है, ये जो जितने भी हैं शाम सरवर साहब हैं, इन्हीं से सीखा है। इससे बाहर तो मेरा कुछ भी नहीं है। शाम सरवर भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बिल्कुल सर, सबको जानता हूँ तकरीबन। जितने भी पाकिस्तान में जो अच्छे मेंटोर्स हैं ना, रेहान अलावाला, सनी अली, साकिब अजहर और शाम सरवर, और ये वो जोहिया साहब जो हैं, और वो जो हैं वो भी रहते हैं, वो सिखाते हैं खानेवाल में वो छोटे खानेवाल में नहीं, एक और मुझे याद आते हैं, शायद साहब हैं, वो करते हैं कोडिंग वगैरह। कोडिंग वगैरह ज्यादा नहीं आती तो फिर वो ज्यादा याद नहीं रहता। सारे इन चीजों को जानता हूँ और इन्हीं से ही ये सारी। अब अगला सवाल ये कि आप तो उनको जानते हैं, वो भी आपको जानते हैं? जी सर, किसी हद तक थोड़ा सा जानते हैं। वो रेहान साहब तो उनसे वो ये है, जैसे उनका अंदाज ही है
वो छोटे लोगों से स्टार्ट करते हैं बात करना। तो रेहान साहब से तो मुलाकात हो जाती है कभी कभी उनकी लाइव स्ट्रीम यार्ड पर। वो उनकी जब बल्कि उनसे जब पहले मिला था तो मुझे उन्होंने यही कहा था कि बेटे तुम तो वो हो जैम हो। उनकी वीडियो भी मैंने कट करके अपने पेज पे लगाई थी। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। अब सनी अली तो नहीं जानते, जाहिर है, वो तो बहुत वो है। ठीक है, तो आप तक भी पहुंच गए हैं। हाँ आप भी जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मैं तो सब बिल्कुल। अच्छा, ये इसकी स्टेटमेंट है, इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स नॉट हु यू नो, हु नोज यू, दैट्स एवरीथिंग। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, तो चलें जी, आपसे अच्छा लगा मिलके जी। आप रियाज साहब, आप अटेंड करते रहें, जितनी मर्जी अटेंड करें। आप बुरैर, आप भी जितनी मर्जी अटेंड करें। जो जो सीख रहे हैं सीखते जाएं, जो काम की चीज़ है वो इस्तेमाल कर लें, जो नहीं काम की चीज़ उसको रहने दें। जी रिजवान हुसैन साहब, मैं अब आपको, आपका सवाल ये था कि मेरा क्या फायदा हुआ, यही है ना? जी सर। हाँ, अब ये बताएं, एक सवाल आपका हो गया, मुझे सवाल समझ आ गया। आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट कॉल, तो इसलिए मैं आपका सवाल का जवाब देना, सवाल एक्सपैंड नहीं मैं अब करने दूंगा, ठीक है, टाइम नहीं है। तो अब आपका सवाल का जवाब ये है, आप इस शो पे आए हैं, आपने मुझे कितने पैसे दिए हैं? 0। 0? मैंने आपसे पैसे मांगे? नो सर। मुझे आपकी हेल्प क्यों करनी चाहिए, बताएं? एज ए ह्यूमन बीइंग। अच्छा, यही काम मैं उसके साथ कर रहा था, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है या नहीं? है सर। अगर कोई बंदा आपके सामने आए जिंदगी में और आप उसकी हेल्प करने की पोजीशन में हैं, समझ गए बात? अगर कोई बंदा बंदी इंसान किसी भी मजहब का, किसी भी कलर का, किसी भी दुनिया से आपके सामने आए और आप उसकी पोजीशन, हेल्प करने की पोजीशन में हैं, जस्ट डू इट। ओके, जितनी आप किसी की सपोर्ट करोगे, अल्लाह ताला का इसको लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं इंग्लिश में, हम मुसलमान कहते हैं आप किसी की जितनी मदद करो आपका उतना ज्यादा फायदा होता है। ये यही कहते हैं ना, मतलब एक ही दोनों का, ठीक है? ये इसको पढ़िएगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी। आप इंसान, आप जितना जितना आपने गेन करना चाहते हो ना, आप ज्यादा कि मेरे पास पैसे आ जाए, मैं अमीर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप करना चाहते हो जिंदगी में, हर एक का पर्पज अपना अपना है ना, उतना ही आपको ज्यादा, जितना आपको ज्यादा चाहिए उतना ही आपने दूसरों को ज्यादा सपोर्ट करना है पहले। उसके बगैर ये आप अचीव नहीं कर सकते जिंदगी में, ये मैं आपको पक्का बता रहा हूँ। ये आई हैव ट्राइड इट, इट वर्क्स, दिस इज द ओनली वे इट वर्क्स, ठीक है? ओके सर। आप एग्जांपल देख लें, आप सामने देख रहे हैं, मैं बंदे से बात कर रहा हूँ, वो बंदा मुझे शट अप कॉल भी दे सकता है, दे सकता है कि नहीं? ऐसे ही मैं उनसे कई दफा फाइनेंशियल क्वेश्चन भी पूछ रहा था, कितने पैसे हैं, कैसे आए, किसने क्या किया, पूछता हूँ या नहीं पूछता? ऐसे ही मेरे मुंह पे मुझे कह सकता है नॉन ऑफ योर बिजनेस, कह सकता है या नहीं? यस सर। कह सकता है ना? यस सर, कह सकता है। हाँ, और वो आप सारे लोग उसको वॉच कर रहे हैं, मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ इस चीज का। मैं उस बंदे को जानता नहीं, अभी आपके सामने कॉल पे आया, कॉल पे चला गया, ठीक है? पर्सनली मैं आई डोंट नो हिम, ठीक है? मुझे अपने आप को इस रिस्क में डालने की क्या जरूरत है आप सबके सामने, बताएं? जरूरत है कोई? ये नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों कर रहा हूं? ताकि मेरी वजह से आप जैसा कोई बंदे को एक लफ्ज भी अगर समझ आ गया तो यू लर्न समथिंग मोर, जो आपको पहले नहीं पता था, कुछ तो समझ आया होगा ना? यस सर। जी जी सर। आप इस तरह के 100 दफा प्रोग्राम में आएंगे, आपको सब पता चल जाएगा कि इस इंसान से बात कैसे करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कैसे लेते हैं, उसके सेल कैसे मांगते हैं। आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो उसके बाद आपको सिद्दीक की जरूरत नहीं रहेगी, लोग लाइन अप हो जाए। आप नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं रहेगी। दैट्स व्हाट आई वांट। आप जैसे लोग अपने अपने फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, आप एम्पावर्ड हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है? अभी जो आप जब पैसों का ज़हन पे रखोगे तो यू विल नेवर अचीव मनी, नेवर एवर गो आफ्टर मनी। फैसल आप अनम्यूट करें। ओके। अभी जो सामने है सबसे ज्यादा आपने अटेंड किए हैं। जी सर। डोंट, मतलब मुझे तो अपील करने का फायदा ही कोई नहीं, ना ही करनी कोशिश करना।
मैं आई go after their money, they make up their own decision every time. Yes, sir. ठीक है, कल जो कैंपेन में बता जी रहा था सर। आप उसमें थे ना, ये जो अकाउंटिंग वाली कैंपेन थी, जी सर। एक क्लाइंट अगर आपको एक साल में, वो 5 साल का कैंपेन है, जी सर। पहले साल में $140,000 है एक क्लाइंट से, अगले 4 साल के पैसे अलग हैं। 5% ऑफ $1.2 मिलियन कितना बनता है? रिजवान आपका मैथ अच्छा है, चूंकि आप पैसों वाले माइंड है ना आपका, कितने बनते हैं 5% ऑफ $1.2 मिलियन? 5% सर भी करना पड़ेगा सर फिर पैसे की बनाने चाहिए, तो मैथ ही नहीं आता था। अगर इतना इंटरेस्ट नहीं है मैथ में, बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। सर $60,000। 4 साल के कितने बनते हैं? $240,000 प्लस $140,000। $380,000। अगर अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे को रिस्पान पे तो नहीं लिखा हुआ, अगर एक अल्लाह ताला ने मुझे एक क्लाइंट दिया जो एक क्लाइंट 300 वट एवर जो अमाउंट बनती है वो देने को तैयार है, ठीक है, तो मुझे क्या जरूरत है यार, जिसके पास पैसे नहीं है उसको हेल्प कर दो। पर मुझे एक बात ये भी समझ आई है ना कि इससे हमारा नेटवर्क ग्रोथ करेगा। हैं? हेल्प तो हमने कर दी है उसकी, हेल्प तो हमने उसकी की है सर एज अ ह्यूमन बीइंग, तो इससे हमारे हमें भी आखिरत में भी फायदा होगा, दुनिया में फायदा होगा, और हमारा नेटवर्क। और यार आखिरत वाला जिसको फायदा हुआ वो आगे किसी ने वापस बताया तो नहीं ना आखिरत में फायदा होगा आपको? किसी को बताया किसी ने आके वापस आके? नहीं बताया ना। तो ये क्या ब्लाइंड बिलीव है कि ये वो होगा, ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा, आप खुदा पे यकीन करते हैं, इस्लाम है, हम उसको अप्लाई करते हैं, तो फिर उसको कर लो अगर फायदा होगा, ठीक है। कहने में और करने में बड़ा फर्क है। जी सर, ऐसे ही। डिसीजन आपका अपना है, आप समझते नहीं करना चाहिए, वो भी आपका डिसीजन है, यू आर राइट। अगर आपका करना चाहिए, अगर आपने अपने आप को हेल्प करनी है तो स्टार्ट हेल्पिंग अदर पीपल, ठीक है। ओके सर। ओके, अभी एक मैंने फेसबुक ग्रुप पे केस स्टडी पोस्ट की है इसी टॉपिक पे थोड़ी देर पहले, वो किधर गई है, एक सेकंड मैं देख लूं जरा। वो है वीडियो इज रेडी, 1 सेकंड, या 1 घंटा पहले पोस्ट की है, उसका टाइटल है, 1 मिनट, ये मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जिसने नहीं देखी होगी वो भी देख लेगा, उसको आवाज करें और आपको पता चलेगा कि कैसे होता है ये। ओके, ओके, ये नजर आ रही है केस स्टडी हेल्प अदर्स टू गेट व्हाट दे वांट एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। रिजवान, इसका मतलब समझ आया या नहीं? सर दूसरों की मदद करेंगे तो हमें असर हो जाएगा जो हम चाहते हैं। नहीं, हेल्प अदर्स गेट व्हाट दे वांट, यू विल गेट व्हाट यू वांट। दूसरों को हेल्प, जो उसको चाहिए उसकी हेल्प करो, उसको हेल्प अचीव करने में आपको जो चाहिए वो आपको खुद ब खुद हो जाएगा। ये जिग जिगलर की ये कोट है, आई लिव बाय दैट कोट, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये कोट्स ऐसे नहीं होते, 1 मिनट के लिए मोटिवेशन नहीं होती, यू हैव टू अडैप्ट समथिंग, उससे आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। और ये गोरे के साथ सुबह मीटिंग आई है, किसी ने रिकमेंड किया उसको, और उसके साथ कॉल कैसी रही वो आप खुद वॉच करके देखें। हालांकि वो खुद कह रहा है कि इसमें मुझे इन्वेस्ट कितना करना है, मैं कहना नो, यू डोंट हैव मनी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू अ पेनी। वो ही वाज रेडी टू पे, आप उसको वॉच करके देखें, दैट्स ए प्रूफ। अगर बंदे, मुझे तो खुद कह रहा कि मैं ये पैसे देने को तैयार हूँ, डोंट टेक माय वर्ड, मैंने पैसों का नाम भी लिया, उसने खुद कहा मुझे इन्वेस्ट कितना करना है इसमें। मैंने कहा नहीं, यू डोंट हैव मनी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क मनी फ्रॉम यू। ओके, ठीक है, ओके, सर, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। चलो जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।